Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. Good evening to all. I hope I am audible to you. You are able to see the screen properly. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you and you are able to see the screen properly. Comment so that I can start. Right. So we have discussed about the biochemistry of carbohydrate. After that, we have started our diabetes. Drug used in the diabetes or treatment of diabetes and diabetes mellitus. So in that we have seen what do you mean by diabetes, how there is a control of blood sugar level. So what are the hyperglycemic factor, what are the hypoglycemic factor we have seen. What is the normal sugar level we have already seen. So what is the combined action of glucagon and insulin. So when there is a less blood sugar level in the blood, glucagon will come in a picture. When there is a higher blood sugar level in the blood, when there is a sugar in the blood, when there is a higher level of glucose in the blood, so insulin will be released. When there is a no sugar or less sugar in the blood, so glucagon will be released. So what they will affect, they will either increase or decrease the glycogenolysis, gluconeogenesis, lipolysis, etc., right? Glycolysis. We have also seen the combined effect of how these two enzymes, they will act opposite to each other depending upon the glucose. So they will respond the blood glucose. If there is a less blood glucose, then glucagon will be released from alpha cell of Langerhans. If there is a high glucose, beta cell will release the insulin. So they will do their respective work. We have already seen. We have seen the examples of enzymes. So what are the hypoglycemic enzyme? Insulin is a hypoglycemic and somatostatin is a hypoglycemic. Remember, insulin and somatostatin both are the hypoglycemic, whereas glucagon, then cortisol, then adrenaline, then growth hormone, they are the hyperglycemic hormone. कि बॉस इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है, और बाकी जो है ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या फिर एसीटीएच, उसको ही बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर एड्रेनालिन और ग्रोथ हार्मोन, ये सब क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. We have seen the diabetes mellitus. So there are different types of diabetes, right? So type 1 diabetes, there is a type 1 diabetes known as insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus, the patient has to live whole life on insulin. But there are two types of type 1 diabetes. Type 1A, type 1A is autoimmune. मतलब इसमें क्या होता है, so your beta cell of pancreatic Langerhans, they are considered as an antigen, against that antibody are made, and there is an antigen antibody reaction and there is destruction of beta cells of Langerhans. So type 1A is a autoimmune type. Type 1 is a autoimmune type. Type B is nothing but, type 1B is nothing but the idiopathic in nature. यहाँ पे कुछ ना कुछ reason होगा idiopathic. Type 2 is known as a non-insulin dependent diabetes mellitus. So type 2 is the most common diabetes in the people. Type 2 most common होता है. There might be either abnormality in the glucose receptor. There might be abnormality in the glucose receptor. Then there might be decreased sensitivity to the existing insulin, or there is a decreased beta cells also. But there is a beta cells, they release the insulin, but your body cell will not respond to insulin. Then type 2 diabetes is also because of the hyper secretion of glucagon, and it may be because of the obesity. Okay. Type 3 diabetes is known as a MODI, that is a maturity onset diabetes of here. So type 1 is also known as juvenile onset diabetes. Type 1 is also known as a juvenile onset diabetes, and that is because of the genetic nature. ये genetically determined होता है, genetic defect अगर है तो आता है type 1. Type 2 mostly because of the it may be a adverse effect, it may be a
destruction of pancreas by pancreectomy, etc., etc. Right? Type 3 is a MODY, maturity onset diabetes, and type 4 is a gestational diabetes mellitus. We have also seen that there are different cells in the pancreas. There are alpha cell will secrete. You know, ये क्या है, pancreatic cell है. There are different cell in the pancreas. Alpha cell will secrete. You know, alpha cell will secrete glucagon. Beta cell will secrete one hormone known as a insulin. Delta cell will secrete one hormone known as a somatostatin. And there is one more cell, PP cell or EF cell. PP cell or EF cell. They will release the pancreatic polypeptide. They will release the PP, pancreatic polypeptide. They will release the pancreatic polypeptide. Right? So आपके pancreatic Langerhans में 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल. पीपी सेल को EF सेल बोलते हैं. Right? Now alpha cell will release glucagon hormone because pancreas act as a both exocrine gland as well as endocrine gland. तो आपको बोला है ना, आपने 12th में भी पढ़ा होगा. तो pancreas और liver act as a exocrine as well as endocrine gland. So endocrine function of pancreas is because of the 4 different type of cell. So 4 different type of cell. First is alpha cell glucagon release करता है, beta cell insulin and amylin. याद रखना है, insulin plus amylin. Beta cell will release insulin plus amylin. And delta cell will release somatostatin. PP cell will release pancreatic polypeptide. Insulin का molecular weight 6000 है, अपन ने देखा है. Insulin has a 2 chain A, chain B. Chain A has a 21 amino acid. Chain B has a 30 amino acids. We have seen in the last lecture. So it is insulin is prepared in the beta cells of Langerhans by from the pre-pro insulin, which has a 110 amino acid, which is broken down, and from that 24 amino acids are removed. Now you will get a pro insulin. Right? Pro insulin has 86 amino acids. Now again from pro insulin 35 amino acids will be removed, that is chain C. You will get finally active insulin known as the 51 amino acids. So जो इंसुलिन है उसमें भी 2 चेन है, चेन A 21 amino acid, चेन B 30 amino acid. We already seen this in the last part. We have seen the secretion of insulin that is regulated by. Secretion of insulin is regulated by 3 mechanisms. First mechanism is a chemical mechanism. Second mechanism is a hormonal mechanism, and third mechanism is a neuronal mechanism. Right? So chemical mechanism में क्या होता है? So whenever there is a whenever you will eat food, आपने खाना खा लिया या फिर आपने शुगर खा लिया. So if you eat a food, if you take a food, if you take a meal, if you eat a sugar, so that sugar will be absorbed from your GIT, and from the GIT you know that most of the blood will go to the liver via portal vein. Now portal vein has a glucose. Portal vein has a glucose. So portal vein liver को जाता है, pancreas को भी जाता है, तो उसमें glucose है. Pancreas में beta cells में क्या आता है? So your beta cell has a some glucose sensing receptors, glucose sensing mechanism, and you have beta cells will have SGLT2 and SGLT1. So glucose transporter 1 and 2 होता है वहाँ पे. So as soon as there is a higher level of glucose in the portal vein, so pancreas will be activated, pancreas will be recognized, and there is a glucose transporter 1 which causes the entry of glucose in the beta cells of Langerhans, and after the entry of glucose, so glucose is converted into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is oxidized and it is converted to ATP. Now ATP जैसे बढ़ता है, so there is a one ion channel known as a ATP sensitive potassium ion channel. ATP sensitive potassium ion channel known as a KTP channel. Right? So that will be inhibited. So ATP sensitive potassium channel that will be inhibited, and that leads to partial depolarization of the beta cell. Okay? After that, because of this depolarization, there is also increase of calcium level in the beta cell. So increase the influx and decrease the efflux, and also there is a release of calcium from sarcoplasmic reticulum. So after all, there is increase in the calcium level in the cell, which causes the exocytosis of insulin, from the granules. And other factors like amino acids, fatty acids, ketone bodies, they also stimulate the insulin. But most potent stimulus to release the insulin is nothing but the glucose. Glucose is a main regulator of insulin synthesis as well as release. Then बाकी oral glucose जो है, orally taken glucose और nutritions. So if you inject a glucose, जैसे DNS लेते हैं, RL लेते हैं, saline लेते हैं, उसमें dextrose होता है. But orally taken glucose will induce
more release of insulin as compared to intravenously taken glucose. तो जब ओरली आप शुगर लेते हो, ओरली आप ग्लूकोज लेते हो, तो जब इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, ना कि वही ग्लूकोज उतने ही अमाउंट में अगर आपने इंजेक्टेबल ले लिया तो उतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ, बिकॉज ओरल ग्लूकोज विल इवोक द रिलीज ऑफ इंसुलिन मोर 2 to 4 times more effective as compared to, है ना, as compared to इंट्रावेनस. क्यों भाई? ग्लूकोज तो वही है, ग्लूकोज अगर इंट्रावेनस देंगे तो फिर भी इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, ग्लूकोज अगर ओरली देंगे फिर भी इंसुलिन रिलीज होना चाहिए. तो ओरल ग्लूकोज ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है एज कंपेयर टू इंट्रावेनस ग्लूकोज. क्यों भाई? क्यों? ये ना इन सभी क्यों, है ना, ये ना इन सभी क्यों होती है? बिकॉज ओरल ग्लूकोज विल आल्सो रिलीज सम पेप्टाइड्स इन द जीआईटी. आपके जीआईटी में कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है, पेप्टाइड रिलीज करता है. तो ओरल ग्लूकोज विल रिलीज वन पेप्टाइड नोन एज अ, ओरल ग्लूकोज विल रिलीज अ पेप्टाइड नोन एज अ इंक्रेटिन्स. इंक्रेटिन्स के टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रेटिन. so this incretins will also help the glucose to, they will also act on a beta cell and they will also release a more insulin. मतलब क्या कि ओरली अगर आप ग्लूकोज लेते हो, ओरली अगर आप ग्लूकोज लेते हो या फिर आपने जो भी खाना खाया उससे भी ग्लूकोज ही एब्सॉर्ब होता है. जो भी शुगर एब्सॉर्ब हो रहा है ओरली, तो वो तो इंसुलिन को रिलीज करेगा ही करेगा, बट जीआईटी में क्या करेगा, एक पेप्टाइड रिलीज करेगा, उसका नाम है इंक्रेटिन्स. उसके टाइप होते हैं, वो इंक्रेटिन भी क्या करता है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द इंसुलिन. मतलब ओरली ग्लूकोज लेंगे तो दो स्टिमुलस जाता है इंसुलिन रिलीज के लिए. दैट्स व्हाई oral glucose evokes more insulin as compared to intravenous glucose. Okay, so what are these incretins? Incretin में टाइप होता है जैसे फॉर एग्जांपल GLP-1. so there is one GLP-1. GLP-1 means glucagon like peptide. GLP-1 glucagon like peptide. GIP glucose dependent insulinotropic है ना polypeptide, and then last होता है VIP vasoactive polypeptide. So incretins means what? They are the proteins, they are the polypeptides released in the intestine इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज. ग्लूकोज जब आता है इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज ये पेप्टाइड्स रिलीज करता है. कौन से पेप्टाइड भाई? GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड. देन GIP मतलब क्या? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड. ओके, एंड देन VIP मतलब क्या? वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड. ओके, एंड देन अगेन वन मोर पैंक्रियोजाइमिन कोलेसिस्टोकाइनिन पेप्टाइड. तो दीज पेप्टाइड्स विल आल्सो स्टिमुलेट द बीटा सेल टू रिलीज द इंसुलिन. मतलब ग्लूकोज एक तरीके से खुद ही इंसुलिन को रिलीज करता है, प्लस ग्लूकोज ये इंक्रेटिन प्रोड्यूस करता है जीआईटी में, और वो भी क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करने के लिए हेल्प करते हैं. तो दैट्स व्हाई ओरल ग्लूकोज विल रिलीज मोर इंसुलिन एज कंपेयर टू इंट्रावेनस ग्लूकोज. राइट नाउ हार्मोनल मैकेनिज्म आल्सो, जो आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन्स है, वट एवर हार्मोन्स रिलीज्ड इन द बीटा सेल्स ऑफ लैंग्रेंज, दे आल्सो देमसेल्फ आल्सो कंट्रोल द रिलीज ऑफ इंसुलिन. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन ACTH, growth hormone ACTH, they will decrease the insulin. Okay, thyroxine will decrease the insulin. Okay, but beta cells of Langerhans, they are produce the insulin. Beta cells are most prominent. तो जो Langerhans है, पैंक्रियास के Langerhans, उसमें कितने टाइप के सेल होते हैं? चार या 5 टाइप के सेल. तो इन द पैंक्रियाटिक Langerhans you have beta cells, you have alpha cells, you have delta cells, you have PP cells, and you have some, ना, right? तो बीटा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट, है ना. अराउंड 70% पैंक्रियाटिक आइलेट्स में बीटा सेल होंगे. 70% बीटा सेल, देन 25% अल्फा सेल्स, एंड देन 5 to 10% डेल्टा सेल, एंड रिमेनिंग आर द पीपी सेल्स. तो मतलब सबसे ज्यादा कौन सा सेल है? बीटा सेल्स है. एंड दे आर फाउंडिंग द, दे आर नथिंग बट दे आर कोर ऑफ योर लैंग्रेंज. आफ्टर दैट सराउंडिंग ऑन बीटा सेल देयर इज अल्फा सेल 25%, डेल्टा सेल 5 to 10%, and then PP cell. So you know that beta alpha cell will release glucagon, beta cell will release, you know, insulin, delta cell will release somatostatin, and PP cell will release pancreatic polypeptide. Right? So okay, so themselves also control the release of insulin. Somatostatin क्या करता है? Inhibit. Somatostatin produced by delta cells of Langerhans will inhibit the release of insulin as well as glucagon. We inhibit the glucose. Okay. So somatostatin will inhibit the release of glucagon and insulin. Glucagon stimulate the release of insulin, and insulin, okay, and insulin also inhibit the release of glucagon. मतलब ये एक का रिलीज कंट्रोल करते हैं. जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखा ना, यहाँ पे इन दिस स्लाइड वी हैव सीन
In this slide you can see over here, so you can see glucagon क्या करेगा, glucagon has a positive effect. Okay, it will stimulate the insulin release, and glucagon also stimulate the release of somatostatin. But insulin क्या करता है, insulin will decrease the release of glucagon and will insulin will decrease the release of glucagon. Okay, somatostatin क्या करता है, somatostatin will decrease the release of insulin as well as glucagon, right? So we have seen this. We have seen that along with the insulin, beta cells may, along with the insulin, beta cells of Langerhans will release one more polypeptide known as the amylin. So amylin is also one of the polypeptide released along with the insulin, and it also inhibits the glucagon secretion. तो ये भी important है, because amylin analog है ना, amylin analog is one of the class. देखो यहाँ पे जैसे आपने देखा है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा है केमिकल मैकेनिज्म. तो अभी ये जो है ATP sensitive KTP channel, ATP sensitive KTP channel, so it is one of the target for antidiabetic drug. तो है ना, जो पहला क्लास है आपका sulfonylureas and है ना sulfonylureas, so they are known as KTP channel blocker. यहाँ पे एक क्लास मिल जाता है आपको. अभी देखो ये ना, सेकंड क्या है, इंक्रेडिन का भी एक क्लास है ना, GLP-1 रिसेप्टर, GLP-1 एनालॉग है ना, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एनालॉग, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है, VIP एनालॉग. तो इसका यहाँ पे दूसरा क्लास आता है आपको, ठीक है. तीसरा क्लास क्या है कि बाबा यहाँ पे इंसुलिन इटसेल्फ इज वन क्लास है ना, ये भी आता है. नेक्स्ट आता है अमाइलिन एनालॉग, ये भी एक क्लास आता है आपका, है ना. न्यूरनल मैकेनिज्म है, न्यूरनल मैकेनिज्म, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ आर सप्लाइड टू योर पैंक्रियाटिक लैंगरस. पैंक्रियाज में क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोथ सिस्टम का ये इनर्वेशन है. तो pancreatic islets are innervated with the sympathetic as well as parasympathetic, that is the vagus nerve. So sympathetic activation alpha 2 receptor, sympathetic activation of alpha 2 receptor will activate the activation of this receptor will inhibit the insulin release, by inhibiting the adenylyl cyclase in the beta cell. Beta 2 stimulation, adrenergic beta 2 stimulation will increase the insulin release by stimulating the adenylyl cyclase, and acetylcholine or vagal stimulation by acting on a muscarinic receptor stimulate the insulin release via inositol 3-phosphate diacylglycerol pathway. Okay, so मतलब neuronal pathway. So insulin is released by three mechanism. First is the chemical mechanism, glucose itself and incretin. Second one mechanism is a hormonal mechanism, जैसे thyroxine, ACTH and other जैसे glucagon वगैरह, and neuronal mechanism. बट न्यूरनल मैकेनिज्म में क्या है, तो न्यूरनल मैकेनिज्म इज लेस प्रोमिनेंट, न्यूरनल मैकेनिज्म इज लेस प्रोमिनेंट. सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म कौन सा है, पहला वाला केमिकल मैकेनिज्म. तो ग्लूकोज का मैकेनिज्म जो है केमिकल मैकेनिज्म, दैट इज द इफेक्टिव मैकेनिज्म टू रिलीज द इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रिया. बट हार्मोनल न्यूरनल मैकेनिज्म इज लेस प्रोमिनेंट, तो इस ये मैकेनिज्म के लिए भी ग्लूकोज चाहिए. तो ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, है ना. तो आप बोलेंगे सर डायबिटीज में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर क्यों नहीं रिलीज होता इंसुलिन? वही तो मैजिक है ना, बताता हूँ. नाउ मेन एक्शंस ऑफ इंसुलिन वी हैव सीन. इंसुलिन व्हाट विल डू, इंसुलिन विल इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द skeletal muscles and adipose tissues. Okay, and entry of glucose is also increased by exercise. That's why diabetic patient को डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करो. क्यों? Because entry of glucose in the skeletal muscle and lipids, skeletal muscle and fat cell is increased by exercise. So insulin क्या करता है, insulin will increase the entry of glucose in the skeletal muscle and fat cell. कैसे? Insulin will increase the glucose transporter. Insulin will increase the glucose transporters, and that's how by increasing the glucose transporters, insulin will increase the utility. Insulin will also increase the production of glucokinase. तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, सो दैट विल बी इंक्रीज्ड, राइट. तो दैट्स व्हाई इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज करता है. कैसे? ग्लाइकोलाइसिस इज इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन. हाउ? बिकॉज इट विल स्टिमुलेट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज अ ग्लूकोकाइनेज. बिकॉज फर्स्ट रिक्विजिट क्या होता है, ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate बाय ग्लूकोकाइनेज. तो इंसुलिन विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ glucokinase.
also it will also increase the production of glycogen synthesis. Glycogen synthesis नाम का एंजाइम बन गया तो क्या बनेगा, it will convert glucose into glycogen, so glycogenesis will be there. So inhibit the insulin also inhibit the phosphorylase which prevent the breakdown of glycogen. देखो तो डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, इंसुलिन नहीं है, तो इन द डायबिटीज देयर इज नो इंसुलिन. तो इंसुलिन का काम अगर पता है तो इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा ये आपको समझ में आएगा. तो इफ देयर इज नो इंसुलिन व्हाट विल हैपन, इंसुलिन का पहला काम क्या है, इंक्रीज इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज एंड इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द स्केलेटल मसल्स एंड लिपिड्स एंड स्केलेटल मसल्स एंड फैट. तो स्केलेटल मसल में एंट्री करके क्या करेगा इंसुलिन, इट विल इंक्रीज द ग्लाइकोलाइसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. लिपिड में क्या है, सो देयर इज लिपोजेनेसिस. तो इंसुलिन नहीं है तो फिर क्या होगा ना, अगर इंसुलिन के प्रेजेंस में, इफ इंसुलिन इज देयर इन द बॉडी, इंसुलिन बॉडी में है तो ग्लूकोज का एंट्री स्केलेटल मसल में होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड लिपिड में जाके ग्लूकोज वहां पे लिपिड बन जाता है. अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, तो ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होगा तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज नथिंग बट डायबिटीज. लिपिड में क्या होगा, लिपोजेनेसिस नहीं होगा, लिपोजेनेसिस नहीं होगा ना तो ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट. अगेन इफ है ना, ग्लूकोज का और एक इंसुलिन का काम क्या है, तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकाइनेज. तो ग्लूकोकाइनेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है. तो अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है. सो इंसुलिन विल स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. अगर इंसुलिन नहीं है, जो डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता है, तो इन द डायबिटिक पेशेंट देयर इज नो इंसुलिन, व्हाट विल हैपन देन. तो ऑब्वियसली इंसुलिन का काम है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन का काम होता है कि इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, बट इंसुलिन ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा मतलब क्या, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा बॉडी में. सो दैट इज इन द पॉलीयूरिया, ग्लाइकोजूरिया, है ना. तो इनिबिट है ना, इंसुलिन क्या करता है, दूसरा काम क्या है, सो इंसुलिन इनिबिट द फॉस्फोराइलेज एंजाइम. ओके, इंसुलिन इनिबिट द फॉस्फोराइलेज एंजाइम व्हिच विल प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करने के लिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम रिक्वायर्ड है. फॉर द ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज इनिबिटेड बाय इंसुलिन. तो डायबिटीज में तो इंसुलिन नहीं है, तो फिर डायबिटीज में क्या होगा, देयर इज अ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, देयर इज अ इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो तो ग्लूकोज बढ़ेगा, दैट्स हाउ देयर इज इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल. So that's why you have to understand the role of insulin. Okay. Now again inhibition of gluconeogenesis. तो इंसुलिन क्या करता है, inhibition of gluconeogenesis. Insulin will prevent the gluconeogenesis. इंसुलिन will inhibit the gluconeogenesis. नया ग्लूकोज बनने नहीं देगा इंसुलिन. क्यों बनने देगा भैया, ऑलरेडी है ना, तो बनने का सवाल ही नहीं था. तो इंसुलिन का काम क्या है कि नया ग्लूकोज नहीं बनेगा. तो इंसुलिन विल प्रिवेंट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट pyroxykinase. Because for the gluconeogenesis this enzyme is very important. Phosphoinyl pyruvate pyroxykinase. तो इंसुलिन इनिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन नया ग्लूकोज नहीं बनने देगा, है ना. तो अभी डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन है ही नहीं डायबिटीज में, इंसुलिन की कमी है. तो इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगा मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज बनेगा नया. पहले भी ग्लूकोज यहाँ पे भी बहुत सारा है और नया भी बन रहा है, तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया. दैट्स व्हाई इन द डायबिटीज हाइपरग्लाइसेमिया क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन पहले क्या करता है कि इंसुलिन का काम ये इंक्रीज इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल. मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर ढकेलना, ग्लूकोज को सेल के अंदर पास करना किसका काम है, तो टू पास द ग्लूकोज इनसाइड द सेल फॉर द ऑक्सीडेशन इज द रोल ऑफ इंसुलिन. इफ देयर इज नो इंसुलिन देन व्हाट विल हैपन, ग्लूकोज विल नॉट बी एंटर इनटू सेल, ग्लूकोज का एंट्री नहीं होगा सेल में, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. दूसरा काम क्या है इंसुलिन का, विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकाइनेज. तो ग्लूकोज क्या, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है by stimulating the enzyme responsible for the metabolism. In absence of insulin, what will happen? So there is no metabolism of glucose. So again, glucose will be increased.
नाउ इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन विल प्रोड्यूस अ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है इंसुलिन, कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग द ग्लाइकोजन सिंथेस। नाउ इफ इंसुलिन इज नॉट देयर, इंसुलिन नहीं होता है डायबिटीज में, डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, देयर इज अ नो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। देन इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट द फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इंसुलिन इनहिबिट द फॉस्फोराइलेज एंजाइम एंड प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, मींस इंसुलिन विल प्रिवेंट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा एंड दैट इज अगेन इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल, है ना। इनहिबिशन, है ना, इंसुलिन का काम क्या है, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिटेड बाय इंसुलिन। अगर डायबिटीज में इंसुलिन नहीं है तो फिर क्या होगा, देयर इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, तो अगेन ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगेन इंसुलिन का काम क्या है, इनहिबिशन ऑफ लिपोलाइसिस, लिपिड को ब्रेक डाउन करने से बचाएगा, राइट। हाँ, अगर इंसुलिन नहीं तो क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा। तो इफ देयर इज नो इंसुलिन इन द डायबिटिक पेशेंट देन लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, तो अगेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोए, है ना। और वो जो एसिटिल कोए अगेन एसिटिल कोए इज यूज्ड टू मेक द ग्लूकोज, एसिटिल कोए यूज्ड टू मेक द ग्लूकोज, अगेन लिपिड्स एंड अगेन कीटोन बॉडीज। तो देखो इंसुलिन का काम होता है कि इनहिबिशन ऑफ लिपोलाइसिस, तो इंसुलिन तो नहीं है डायबिटीज में पेशेंट में, तो फिर क्या होगा, लिपोलाइसिस हो जाएगा वहां पे। इंसुलिन इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को, लिपोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, तो इंसुलिन का काम है कि लिपोलाइसिस प्रिवेंट करना, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन तो नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होगा, ये लिपोलाइसिस वहां पे ज्यादा हो जाएगा, देयर इज अ मोर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स होने के बाद में क्या, फ्री फैटी एसिड्स इन द प्लाज्मा विल बी देयर, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएगा, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएगा एंड उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस ये वो सब कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो लिपिड बढ़ गया तो लिपिड का ब्रेकडाउन होके एसिटिल कोए बनता है, वही एसिटिल कोए से ग्लूकोज बनता है, ठीक है, या वही एसिटिल कोए से कीटोन बॉडीज बनता है, जैसे कीटोन, एस्टोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, कीटोन बॉडीज बनता है। Now that ketone body is utilized for the production of energy, but partly and remaining will be excreted, है ना। तो ब्लड में कीटोन का बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ता है, कीटोनेमिया हो जाता है, यूरिन में कीटोन आ जाता है, कीटोन्यूरिया हो जाता है, राइट। देयर आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। देखो एक इंसुलिन की वजह से इतना सारा हो रहा है, इंसुलिन नहीं है तो ये सब हो। अगेन इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, है ना, इंसुलिन इंक्रीजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड वेसल में लिपोप्रोटीन लाइपेज का प्रोडक्शन बढ़ता है। लिपोप्रोटीन लाइपेज मतलब क्या है, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीन, है। इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज, है ना। तो ये इंसुलिन के प्रेजेंस में होता है, इंसुलिन नहीं है तो क्या, इज द डिक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है। नाउ अगेन इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, इंसुलिन क्या करेगा, अमीनो एसिड का यूज ज्यादा करेगा। तो इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या है, इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन, याद रखना है आप, क्या है, एनाबोलिक हार्मोन, इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन, इंसुलिन इज एनाबोलिक, एनाबोलिक मतलब क्या, बनाने वाला, मतलब ये अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो इट इज एनाबोलिक एंजाइम, है ना। ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लूकोज से क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, है ना। इंसुलिन इज एनाबोलिक एंजाइम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज नो इंसुलिन सो देयर इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, राइट। तो अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, प्रोटीन बनाएगा। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, अमीनो एसिड्स विल बी देयर इन द बॉडी, that is converted into glucose, again glucose, okay। now all these actions are known as rapid actions। अभी ये जो actions है, जैसे कौन से actions अभी देखे अपने, whatever actions we have seen, कौन से actions, तो increase in the utilization of glucose, है ना, entry बढ़ाएगा, है ना, increase in the entry of glucose, this action, then increase in the production of glucokinase, this action, then inhibition of phosphorylase in glycogen synthesis, this action, then inhibition of gluconeogenesis, this action, then inhibition of lipolysis, this action, increase the transcription of this action। all these actions are rapid, ये actions within a minutes आपको मिलते हैं,
So these actions you will get within a few minutes when insulin will act on its receptor. When insulin will act on its receptor, so these actions you will get in a few minutes. Known as a rapid action. Known as a rapid action. All these actions are rapid actions. Now there are few actions of insulin which are intermediate action. जैसे intermediate action क्या है इंसुलिन का? Intermediate action of insulin, तो DNA mediated synthesis of glucose transporter. तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर भी बढ़ाएगा ये, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंक्रीज है ना. So insulin will increase the production of glucose transporters, but that will take some time. Known as the intermediate action. There are some long-term action. Of insulin. So multiplication and dedifferentiation of many cells. It is a long-term effect of insulin. So insulin will exert a different effect, है ना. इंसुलिन क्या है, अलग अलग इफेक्ट दिखाता है. एक आता है rapid actions of insulin, intermediate action of insulin, and long-term action of insulin. Okay, so I hope you have understood. Next part we'll see. Okay, pharmacotherapy of diabetes mellitus. सबसे पहले diabetes mellitus क्या है? It is a chronic metabolic disorder. Question already आ चुका है ये. What is that? It is a chronic metabolic disorder. Metabolism disturb हो रहा है ना. मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इंसुलिन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, इंसुलिन नहीं तो टीसी साइकिल नहीं होगा, इंसुलिन नहीं है तो ग्लाइकोजिनेसिस नहीं होगा, इंसुलिन नहीं है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, इंसुलिन नहीं तो लिपोलाइसिस होगा. दैट्स व्हाई इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना. तो क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द फैक्टर्स लाइक, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डायबिटीज इज द इंसुलिन डिफिशियंसी. सबसे ज्यादा क्या है? इंसुलिन डिफिशियंसी मेन फैक्टर है. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन डिफिशियंसी किसमें होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी द टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डिफिशियंसी. इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? टाइप 2 डायबिटीज में. तो मेटाबॉलिक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द फैक्टर लाइक इंसुलिन डिफिशियंसी which is in a type 1 diabetes, or there may be insulin deficiency and insulin resistance in a type 2. So what is the etiology? Reason क्या है? कारण क्या है डायबिटीज का? So it may be either genetic or bad eating habits or drugs. Some drugs may produce and exercise. So condition, इसमें symptoms क्या है? Condition क्या characterized by hyperglycemia, मतलब more glucose in the blood. Glycosuria मतलब glucose in the urine. Hyperlipidemia मतलब lipid level बढ़ जाता है. Negative nitrogen balance and sometimes ketonemia. Ketone bodies भी आता है आपके blood में. There is increased ketone bodies in the blood or ketonuria. Ketonuria, right? So these are the symptoms of diabetes, right? Symptoms of diabetes. Diabetes के symptoms ये है. Age related factor भी होता है, age के कारण भी होता है, obesity के कारण भी होता है. We already seen. Now normally in the fasting, okay, fasting blood glucose level, if the fasting blood glucose level exceeds, अगर आपका खाली पेट ग्लूकोज लेवल चेक किया बॉडी का, अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, if your fasting blood glucose level is more than 125 milligram per deciliter and postprandial blood glucose level is more than 200 milligram per deciliter, मतलब खाली पेट का शुगर लेवल 126 से ज़्यादा है और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो यू डायबिटीज मेलिटस इज डायग्नोस्ड, मतलब ये डायबिटीज मेलिटस है. नाउ इन दिस केस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना. जीपैट 2020 में क्वेश्चन 21 में क्वेश्चन आ चुका है. तो दिस HB1AC, HB1AC क्या होता है? HB1AC क्या होता है मैं बोलता हूँ. सपोज इफ एनी डायबिटिक पेशेंट इज देयर, तो उसमें क्या होता है? देयर इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ब्लड में हो गया, तो ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में हो गया तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल ब्लड में है, वो ग्लूकोज कहीं ना कहीं जाएगा. वो ग्लूकोज क्या करता है? फिर हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है. दैट ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द ब्लड दैट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन, नोन एज अ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. So extra glucose in the blood will cause glycosylation of hemoglobin and proteins, and different tissues. Okay, so one of the very very important test that is known as the HB1AC. Now if glycosylated hemoglobin is more than 6.5%, you are suffering from diabetes mellitus. Now types of diabetes we have already seen. So type 1 is known as a
टाइप 1 याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसके ऊपर ना। टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस इज आल्सो नोन एज अ जुवेनाइल ओनसेट डायबिटीज मिलिटस। क्या बोलते हैं उसको भाई? जुवेनाइल ओनसेट डायबिटीज मिलिटस। जुवेनाइल मतलब क्या? बचपन में ही आता है ना, बचपन का प्यार मेरा बोल नहीं जाना। तो बचपन में क्या होता है? जुवेनाइल डायबिटीज होता है। जुवेनाइल डायबिटीज मीन्स व्हाट? टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो नोन एज अ जुवेनाइल डायबिटीज, juvenile onset diabetes. Type 1 is nothing but the insulin dependent diabetes mellitus. Juvenile onset of diabetes or insulin dependent diabetes mellitus. Now अगर किसी को type 1 diabetes हो गया है, if anybody is having type 1 diabetes, that patient has to live lifetime on insulin. So what happens in the type 1? There is either destruction of pancreatic beta cell. Beta cell का काम क्या होता है? To produce insulin. और इसका ही डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है? It may be either autoimmune or it may be either idiopathic. Most of the time it is autoimmune. So there is destruction of beta cell and that's why there is a lack of insulin. So absolute insulin deficiency is there. Type 1. Type 1 में क्या है? सबसे ज्यादा इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है। Type 1 is known as a juvenile onset, also known as the insulin dependent diabetes mellitus. There are two type of type 1, type 1A and type 1B. We have already seen in the previous slides. Okay. Now type 2 diabetes क्या होता है? Type 2 diabetes also known as a maturity onset diabetes. Type 2 diabetes known as a maturity onset diabetes. ये maturity के बाद में होता है and it is a non insulin dependent diabetes mellitus. तो NIDDM है ना। Type 1 is a insulin dependent diabetes mellitus. Type 2 is a non insulin dependent diabetes mellitus. So type 2 is known as a maturity onset diabetes, right? Now इसमें क्या होता है कि now in the type 2 there is a abnormality of glucose receptor of the beta cell. The patient has a insulin in the plasma. इसमें क्या है? Patient has a insulin but insulin is a less. Patient has a insulin is a less. एक तो कम हो सकता है इंसुलिन या फिर there is a resistance to the insulin. Now in the type 2 diabetes, so there is a no destruction of beta cell. There may be decrease in the beta cell but no destruction. But definitely there is a less level of insulin and that is less level of insulin. And now this insulin is also not reacting. Your cell is not also reacting. So there is a insulin in the plasma but insulin in the plasma responds to the glucose concentration but insulin resistance is there. यहाँ पे क्या है? Your cell will not respond to insulin. There is a down regulation of insulin receptor. यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर भी कम हो चुके हैं and it occurs in the obese patient. It occurs in the obese patient. Obesity is the one of the reason for type 2 diabetes. Now obese patient, it occurs in a obese patient and associated with the ketoacidosis. यहाँ पे ketone bodies ज़्यादा होंगे, right? Now there is a reduced sensitivity and because of the its reduced utilization of glucose, known as a type 2 diabetes. Now type 3 diabetes क्या होता है? Type 3 diabetes is nothing but the known as a MODI, maturity onset diabetes mellitus of AIIMS. Type 3 due to the hormonal disorder or genetic disorder treated by oral hypoglycemia. Type 4 is known as a gestational diabetes mellitus. जो प्रेगनेंसी में होता है उसको बोलते हैं टाइप 4. टाइप 4 इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus. ना टाइप 3 क्या है? मोडी है. मोडी मतलब क्या? मोडी लैंग्वेज नहीं, मोडी लिपि नहीं. मैच्योरिटी onset diabetes of AIIMS ना, we have already seen in the previous slides. Now insulin deficiency resultant. अगर इंसुलिन नहीं है, if there is a insulin deficiency, what happens? So insulin deficiency resultant, insulin deficiency resultant यहाँ पे decrease the peripheral utilization of glucose and production of ATP, decrease the synthesis of glycogen, the liver and muscle, increase the protein catabolism. देखो इंसुलिन का डिफिशियंसी अगर हो गया, if there is a insulin deficiency, what will happen? If there is a insulin deficiency, what will happen? There is a decreased utilization of peripheral glucose. Peripheral utilization क्या होगा? कम होगा. Decreased है. तो क्या है? Decreased. So if there is a no insulin or if there is a deficiency of insulin, what will happen? There is a decreased peripheral utilization of glucose
decrease the gluconeogenesis, sorry, decrease the glycogen synthesis and increase the protein catabolism, protein का breakdown ज़्यादा होगा and gluconeogenesis ज़्यादा होगा, increase the lipolysis, increase the free plasma fatty acid, increase the gluconeogenesis with the increase the hepatic glucose output, increase the ketogenesis, decrease the lipogenesis and decrease the cell mediated immunity. इंसुलिन अगर नहीं है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होगा, ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, है ना, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, है ना, सेल को बॉडी को लगेगा आपके पास ग्लूकोज है ही नहीं, ये सेल में जाएगा नहीं, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज, सेल को तो ग्लूकोज लग रहा है ना, मतलब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देता है ना, इंसुलिन नहीं तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो सेल को यही लगेगा ना, अपने सेल को यही लगेगा कि ग्लूकोज है ही नहीं, तो सेल और ग्लूकोज बनने के लिए तैयार करेगा, मतलब देयर इज अ ग्लूकोनेओजेनेसिस, फॉर दैट देयर इज अ लिपोलाइसिस and because of that lipolysis there is increase the lipid level in the plasma. So deficiency of insulin result in decrease the peripheral utilization of glucose, decrease the energy production, decrease the glycogen synthesis, increase the protein catabolism, gluconeogenesis and lipolysis, right, and that result in the increase the ketogenesis and depress the cell mediated immunity. तो डायबिटिक पेशेंट का क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, डायबिटिक पेशेंट का क्या है भाई, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, depress the cell immunity. Now what is insulin? Insulin is a hormone produced by beta cells of Langerhans which is a protein in nature, which is a peptide in nature. So insulin क्या है, peptide है, insulin is a peptide. Insulin is a peptide containing two chain. Insulin is having two chain. First chain is known as the A chain, which has a 21 amino acid A chain. The second chain is a B chain, which has a 30 amino acid. So total amino acid present in the insulin 51. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, how many amino acids are present in the A chain and how many amino acids are present in the B chain. यहाँ पे 21 A chain में कितना होता है, 21, देखो 21. So there is a 21 amino acids in the A chain and there is a 30 amino acids in the B chain यहाँ पे. Now these two chains they are joined by disulfide bond. यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, they are joined by disulfide bond. Chain A, chain B, they are joined by disulfide bond. Okay, so 51 amino acids are there. Total 51 amino acids are there. कितने हैं? Total 51 amino acids. So insulin is a protein containing 51 amino acid. Molecular weight कितना होता है, 600 delta. We already seen in the last lecture. 6,000 delta. Molecular weight, ठीक है? Now what is insulin? Insulin is extracted first time by Benting and Best. इसके ऊपर दो बार एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है. Benting and Best in 1921 they have isolated insulin. Insulin was first time isolated and extracted by Benting and Best. कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका फ्रॉम द पैंक्रियास. Now इनिशियली जब डायबिटीज होता था उसके लिए पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट हो रहे ट्राई किया लोगों ने, मतलब एज इट इज पैंक्रिया निकल के दे देते, but that was producing lot of harmful effect because pancreas is a protein, it is not a purified insulin, so that is used to induce the anaphylaxis and all that. Diabetes is nothing but the diabetes क्या है, it is nothing but the presence of sugar or presence of glucose in the blood and urine. So patient are characterized by 3Ps. 3P मतलब क्या, पॉलीयूरिया मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन करेगा. पॉलीफेगिया मतलब क्या, बहुत ज्यादा यूरिन की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा. पॉलीडिप्सिया मतलब क्या, बहुत ज्यादा उसको खाना खाने का मन करेगा. तो इंक्रीज द हंगर, इंक्रीज द थर्स्ट एंड इंक्रीज द यूरिन. तो यूरिनेशन इंक्रीज होगा, थर्स्ट इंक्रीज होगा, उसका है ना हंगरी रहेगा. हंगर, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया. तो पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन विल बी इंक्रीज एंड इन द यूरिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर डायबिटीज. तो इंसुलिन वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपने देखा है ऑलरेडी. तो फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वी ऑलरेडी सीन, बट सी daily consumed sugar, whatever you are eating food,
सो मेनली कार्बोहाइड्रेट. सो वट एवर सपोज आपने चपाती खाया, रोटी खाया है ना, भाकरी खाया, that will be digested. Okay, starch will be converted into oligosaccharide will be converted into disaccharide and monosaccharide. Okay, so carbohydrate like a starch which is a polysaccharide, and sugar, okay, that is converted into sugars, then known as the disaccharide in the stomach. Now carbohydrate metabolism start itself from the saliva only. आपके saliva में क्या होता है? Okay, carbohydrate metabolism start from the mouth. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Carbohydrate metabolism start from the mouth itself, because in the mouth you have saliva, and saliva has one enzyme known as salivary amylase. salivary amylase का नाम है टैलिन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. मतलब एक स्लाइड में 10 बार क्वेश्चन है यहाँ. तो जस्ट इन वन स्लाइड एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैंने बोला है. ये 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना. Salivary amylase will break down the carbohydrate known as the talin, over the talin. Okay? And there is another pancreatic amylase. Pancreas में भी amylase होता है, that will break down the, so present in the brush bud. Okay, that will break down a oligosaccharides into a single unit. Okay? Now after the breakdown, ये क्या होता है? breakdown होता है जो आपने चपाती खाया, जो आपने रोटी खाया, उसमें का जो स्टार्च है वो इंटेस्टिनल जूसेस में, इंटेस्टिनल एंजाइम्स में ब्रेकडाउन होके, है ना, पॉलीसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड बनेगा, ओलिगोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनेगा, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनेगा, और उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा. राइट, तो उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा. आफ्टर द एब्सॉर्प्शन, हाउ इट इज एब्सॉर्ब. नाउ फॉर द एब्सॉर्प्शन यू नीड वन एंजाइम, है ना, फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन बनने के लिए, फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज देयर. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इट विल गिव यू वन ऑफ द क्लास. फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन देयर इज वन एंजाइम नोन एज अल्फा ग्लूकोसिडेज. यहाँ पे एक एंजाइम होता है इंटेस्टाइन में, अल्फा ग्लूकोसिडेज इज प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर्स ऑफ जेजनल एंट्रोसाइट. तो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज. तो alpha glucosidase is the enzyme present in the brush borders of jejunal enterocytes. It will break down the oligosaccharide into monosaccharide. मतलब जो ओलिगोसैकेराइड है उसको ब्रेक डाउन करके मोनोसैकेराइड बनता है. कौन? अल्फा ग्लूकोसिडेज. डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है ना, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो आपको एक काम करना है कि ये, है ना, एब्सॉर्प्शन ही ये नहीं होने देना है ग्लूकोज का. एब्सॉर्प्शन ब्लॉक करो, ब्लॉक द एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा. How you can block the absorption? By inhibiting this enzyme alpha glucosidase, right? By inhibiting this enzyme, and that's why there is one class known as alpha glucosidase inhibitor. Inhibitor of alpha glucosidase जैसे आपका मिग्लिटॉल, वोल्गिबोज, है ना, अकेरबोज, वोल्गिबोज, मिग्लिटॉल, ये ड्रग के नाम है. अकेरबोज, है ना, वोल्गिबोज एंड मिग्लिटॉल. What this drug will do? They will inhibit the alpha glucosidase so that there is no absorption of glucose. ना ये एक क्लास होता है आपका, हम देखेंगे बाद में. But remember this, that's how glucose is absorbed, right? Next, utilize कैसे होता है glucose? After absorption, glucose will be utilized. So glucose is the main source of energy for brain and other tissue. है ना, brain, RBCs totally depends on the glucose. Other tissue can utilize glucose as well as other material like fatty acid. जैसे मसल है, मसल टिश्यू के लिए भी ग्लूकोज है, क्या है, एटीपी का सोर्स है. ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल आल्सो, बट इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज मसल कैन ब्रेक डाउन द लिपिड्स. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन विल फैसिलिटेट, इंसुलिन विल स्टिमुलेट द, इंसुलिन विल कॉज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, मेक्स पॉसिबल इट्स यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू at a lower glucose level then would be possible without insulin. तो अगर ग्लूकोज लेवल कम है सेल में, मसल सेल में, तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में का ग्लूकोज मसल में डाल देता है, मसल सेल में. तो वो रोल है. विदाउट इंसुलिन इट इज नॉट पॉसिबल. आफ्टर एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन टू सेल इट इज फॉस्फोराइलेटेड टू, है ना, इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6% सेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस. एक बार एंट्री हो गया सेल के अंदर तो ग्लाइकोलिसिस चालू होता है, ट्रैकर बॉक्सिलिक एसिड चालू होता है,
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, मतलब मेटाबॉलिज्म वी आर सीन इन द बायोकेमिस्ट्री. So very important for the utilization of glucose, glucose must enter into a cell. Prerequisite, सबसे पहले स्टेप क्या है कि ग्लूकोज का सेल के अंदर जाना इंपॉर्टेंट है. वो कौन करता है? वो इंसुलिन करता है. राइट. नाउ ग्लूकोज लेवल चार्ट देखो. नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड बी अराउंड 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, है ना. फास्टिंग मतलब खाना नहीं खाया आपने, रात भर आप भूखे हो, रात में एक बार खाना खाया 9 बजे, तो सुबह सुबह खाली पेट आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है. तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. अभी अभी आपने खाना खाया, जस्ट एट, खाना अभी अभी खाया, तो ब्लड शुगर लेवल भी अराउंड 120 to 100. पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाना खाने के बाद में 2 आवर्स के बाद में आपने ब्लड शुगर लेवल मेजर किया. तो आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील यू हैव मेजर द ब्लड शुगर लेवल, दैट शुड बी 120 to 140. नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इतना होना चाहिए कि फास्टिंग 120 by 80, जस्ट 8, 170 by 170 to 20, है ना. मतलब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. जस्ट खाना खाया है, जस्ट 8, 170 to 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. पोस्ट पेरेंटल दैट इज 2-3 आवर्स आफ्टर द मील, 120 by 120 to 140. नाउ इट इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मली इतना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल. नाउ प्री डायबिटिक मतलब क्या? ये डायबिटीज हुआ नहीं अभी, इसको हो सकता है. प्री डायबिटिक मतलब क्या? डायबिटीज नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है. कब हो सकता है? ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 101 to 121, है ना. 125 तक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है उसका. खाना खाने के बाद इमीडिएटली 190 to 230 मिलीग्राम पर डेसिलीटर आ रहा है. तो खाने के 3 घंटे बाद में 140 से ज़्यादा आ रहा है, 140, 160 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. तो इसमें डायबिटीज हो सकता है आगे जाके. तो प्री डायबिटिक. नाउ नेक्स्ट आता है डायबिटिक. व्हाट डू मीन बाय डायबिटिक? तो ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, जस्ट इट इज मोर देन 300, and post parental is more than 200 plus milligram per deciliter, known as a diabetic patient. Glucose charge. Now what is that? Glucose entry will be there in a different cell. So how glucose will be utilized by the cell? Through insulin, because insulin क्या करता है? Glucose transporters का. तो insulin will produce a glucose transporters. Now you should know the glucose transporter. आपने देखा है ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, बट स्टिल. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, GULT1, ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द सेल, बहुत सारे सेल में होता है, एंड हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. सो इट विल इंक्रीज द बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज को डाल देगा. मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये GULT1 होता है. पैंक्रियाज में भी होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पैंक्रिया. Now second, glucose transporter 2, it is present in the liver, then beta cells of Langerhans, and it is present in the hypothalamus, basolateral membrane of intestine. तो ये intestine में भी होता है. Responsible for the, it is a carrier for glucose and fructose, liver and intestine. Intestine में absorption कौन करता है ना? Absorption के लिए ये responsible है. From the intestine, glucose is absorbed from GULT2. Now GULT3, glucose transporter 3, present in the neuron, placenta and testis. ब्रेन. तो अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज. GULT4 का आप होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, प्रेजेंट इन द लिपिड्स, प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू एंड कार्डियक मसल. तो एक्टिविटी ऑफ दिस GULT4 इज इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, म्यूकोजल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पम्प्स एंड किडनी, तो इन्वॉल्व इन द फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 का ग्लूकोज से ज़्यादा फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है. एंड देयर इज वन मोर नोन एज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रो, इसको अपन बोलते हैं ये GULT2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, है ना. तो वो एक वन ऑफ द टारगेट है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट फॉर एंटीडायबिटिक ड्रग. ये GULT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ये जो ना सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, है ना. इसके आगे सोडियम लगा दो, इसके आगे सोडियम लगा दो यहाँ पे, ये नहीं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2. अगेन इट इज वन ऑफ द टारगेट फॉर एंटीडायबिटिक ड्रग. तो एंटीडायबिटिक ड्रग का एक क्लास सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, मतलब ये GULT2 इनहिबिटर्स होता है ना.
देखो यहाँ पे इंसुलिन है ना, इंसुलिन इज मेड फ्रॉम प्री प्रो इंसुलिन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्री प्रो इंसुलिन होगा, इंसुलिन इज मेड फ्रॉम प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन से क्या बनेगा, प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन एज 110, 100 सामान्य ऐसे होते हैं प्री प्रो इंसुलिन में, तो प्री प्रो इंसुलिन will be broken down and converted into pro insulin. Pro insulin has a 3 chains, chain A, chain B and chain C. Pro insulin has a 86 amino acid, इसमें क्या है 86, प्री प्रो इंसुलिन में क्या है 110 है। प्री प्रो इंसुलिन हैज अ 110 अमीनो एसिड्स, प्री प्रो इंसुलिन से बनता है आपका प्रो इंसुलिन हैज 86 अमीनो एसिड एंड दिस चेन सी, देयर आर 3 चेन्स इन द प्रो इंसुलिन, तो दिस चेन सी इज ब्रोकन डाउन, ये चेन सी ना ये रिमूव किया जाता है, दिस इज ब्रोकन डाउन बाय प्रोटीओलाइटिक एंजाइम एंड ओनली चेन ए एंड चेन बी इज देयर। नाउ ये चेन ए और चेन बी के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड दैट विल गिव यू इंसुलिन। This is the active insulin, which is having 51 amino acids, which is having 51 amino acids. याद रखना है, क्वेश्चन आता है how many amino acids are present in the pre-pro insulin? So in the pre-pro insulin 110 amino acids, in the pro insulin 86 amino acids, and in the active insulin 51 amino acids. Now है ना, तो पहले हम जब डायबिटीज हुआ लोगों को तो पहले तो एक्सट्रैक्ट ट्राई किया है ना, पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट, बाद में क्या किया कि इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू किया, तो आदमी को तो नहीं मार सकते ना, फिर उन्होंने डुक्कर को मार दिया, उन्होंने जानवर को मार दिया, मतलब क्या, तो द इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम डुक्कर, इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम पिग्स, इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम पिग्स इज नोन एज अ pork insulin and insulin obtained from cattle is known as a है ना bovine insulin। तो जो इंसुलिन आपको डुक्कर से मिला है उसको बोलेंगे पोर्साइन इंसुलिन, और जो इंसुलिन आपको कैटल से मिला है उसको बोलेंगे बोवाइन इंसुलिन। नाउ ह्यूमन इंसुलिन एंड बोवाइन और पोर्साइन इंसुलिन दे आर डिफरेंट। ह्यूमन इंसुलिन एंड इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम पिग्स, उसमें डिफरेंस क्या है कि बॉस ह्यूमन इंसुलिन क्या है, ह्यूमन इंसुलिन में चेन ए जो है, चेन ए में 8 नंबर का अमीनो एसिड, इन द ह्यूमन इंसुलिन in the chain A 8 number amino acid is a 318 in the human insulin क्या है 8 नंबर अमीनो एसिड है चेन ए में, चेन ए का यहाँ पे 8 नंबर अमीनो एसिड है 318, चेन ए में 10 नंबर का अमीनो एसिड कौन सा है आइसोलूसिन इन द ह्यूमन, एंड इन द बी चेन 30 नंबर अमीनो एसिड इज नथिंग बट 318। अभी जो इंसुलिन डुक्कर से आया है, इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम द पिग्स, व्हाट इज द डिफरेंस, तो चेन ए में 8th अमीनो एसिड इसमें भी क्या है 318, 10th अमीनो एसिड इसमें भी क्या है आइसोलूसिन, बट चेन बी में क्या है, इसमें टायरोसिन की बजाय यहाँ पे एलानिन है, तो चेन बी में 318 की जगह क्या है एलानिन। तो पोर्क इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय 1 अमीनो एसिड, रिमेंबर क्वेश्चन आता है, तो पोर्क इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन अमीनो एसिड बाय 1 अमीनो एसिड ओनली। Pork insulin differs from human insulin by 1 amino acid. Now beef insulin cattle से जो आता है उसको, now in the beef insulin at 8th amino acid of A chain there is a alanine, okay, यहाँ पे alanine होता है, 10th amino acid of A chain there is a valine, and in a B chain there is a 30th amino acid, 30 amino acid is alanine। मतलब देखो यहाँ पे थ्रियोनिन होना चाहिए, यहाँ पे एलानिन है, यहाँ पे आइसोलेशन होना चाहिए, यहाँ पे वैलिन है, दैट मीन्स व्हाट, सो पोर्क इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय 1 अमीनो एसिड एंड बीफ इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन अमीनो एसिड बाय 2 अमीनो एसिड्स। बीफ इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन बाय 2 अमीनो एसिड्स, पोर्क इंसुलिन डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय 1 अमीनो एसिड, राइट, ये डिफरेंस याद रखना है, क्वेश्चन आता है। Now you can see over here again, so in insulin chemistry of insulin, very important question, बहुत बार आ चुके हैं इसको।
So it is a hormone produced by beta cells of Langerhans and it was extracted first time by Banting and Best in 1921. Question इसके ऊपर आ चुका है. But insulin was obtained in a crystalline form by Abel in 1930. By Abel in 1930. So insulin क्या है? Insulin is a polypeptide with a 6000 Dalton molecular weight, 51 amino acids. It has a two chain polypeptide chain. Insulin क्या है? It is a polypeptide. Molecular weight कितना है इसका? 6000 Dalton. Right? So insulin has a two chain A, chain B. Chain A में होता है 21 amino acid, chain B में होता है 30 amino acid, and both chains are joined together by disulfide bond. Both chains together by disulfide bond. और right? याद रखना है इसके ऊपर बहुत तीन बार आप रिपीट किया मैंने. I have repeated this thing 3 times. ना insulin is a polypeptide first time obtained by first time isolated by Banting and Best. It is produced by beta cells of Langerhans. So it is nothing but the polypeptide having molecular weight 6000 Dalton. It has a two polypeptide chain. It has a two peptide chain. Yeah. There is a 51 amino acid. It has a 51 amino acid. There is a 51 amino acid in the insulin, and chain A has a 21 amino acid. Chain B has a 30 amino acid. So 51, right? And connected by disulfide bridge or bond, right? Which is very essential for its biological activity. Now pork insulin मतलब insulin often formed डुक्कर, है ना? Pork insulin मतलब क्या? Insulin often formed डुक्कर, right? Pork insulin differs from human insulin by one amino acid. Whereas beef insulin मतलब जानवर से, है ना, गाय मसीज बैलोज जो है उससे जो इंसुलिन मिला है, that differs in the 3 amino acids. So pork insulin differs from human by 1 amino acid. Beef insulin differs from the human insulin by 3 amino acids, right? You have to 2 amino acids. You have to understand this. Now synthesis and storage of insulin. Synthesis and storage of insulin. So the islets of Langerhans. Yeah, islets of Langerhans. Pancreas में क्या है? Islets of Langerhans. So islets of Langerhans of pancreas has a different type of cell: alpha cell, beta cell, delta cell, PP cell. Okay. So alpha cell will produce a glucagon. Alpha cell will produce a glucagon. Beta cell will produce a insulin, and delta cell will produce a somatostatin, and PP cell will produce a pancreatic polypeptide. इसके ऊपर GPAT में बहुत बार क्वेश्चन आए. तो है ना, क्वेश्चन देखो, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल? बीटा सेल. इसके ऊपर कम से कम 7 बार क्वेश्चन आए. ये 7 बार क्वेश्चन आए. इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ लैंगरेंस, है ना. अल्फा सेल विल प्रोड्यूस व्हाट? व्हिच हार्मोन? इसके ऊपर क्वेश्चन आया. अल्फा सेल विल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. बीटा सेल विल प्रोड्यूस इंसुलिन. इसके ऊपर बहुत बार आया है. डेल्टा सेल विल प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन, and PP cell will produce a pancreatic polypeptide. PP cell is also known as the F cell. ठीक है. इसके बाद में GPAT रिसेंटली जो GPAT 20 था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स विद देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन प्रोड्यूसर. मतलब क्या, 2 कॉलम दिए आपको. एक कॉलम में क्या दिया? पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन फंक्शन. पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन फंक्शन मतलब वही B सेल, है ना, A सेल, D सेल. पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन फंक्शन एक कॉलम में दिया. एक कॉलम में क्या दिया आपको? नेम्स ऑफ हार्मोन्स, है ना. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मैच. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है. तो माय पॉइंट बीइंग, लॉट ऑफ टाइम्स दे ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस. बेंटिंग एंड बेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना. उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. प्री प्रो इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड होता है, प्रो इंसुलिन में कितना होता है ना. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. नाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, है ना, insulin is synthesized in the beta cells of Langerhans, है ना, from a precursor polypeptide known as the pre-pro-insulin. तो pre-pro-insulin में क्या है? 110 amino acid, 110. Then which is converted into pro-insulin. Pro-insulin में क्या है? 86 amino acid. And then lastly biologically active insulin is made, which is having 51 amino acids. Now after the synthesis, insulin is stored in the granules of the beta cells, and insulin is released in a repeated pulses into circulation in response to the glucose.
Storage of insulin is increased or enhanced by zinc. Secretion is regulated by chemical, hormonal and neuronal mechanism. We have already seen these three mechanisms. Beta cells will have glucose sensing mechanism, dependent nature of glucose, transport of GLT1. Half life of insulin कितना है? 5 to 6 minutes. Half life of insulin is only 5 to 6 minutes. यहाँ पे important है, क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ चुके हैं. I will just make one correction over here. Half life of insulin is only 5 to 6 minutes in the plasma. Half life of insulin only 5 to 6 minutes in the plasma. You have to remember this. I hope I am audible to you and you are getting my points. If yes, please write yes in the comment box. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. If yes, please write yes in the comment box. Okay. Next part देखो, factors determining the insulin release. तो insulin release करने के लिए कौन से factor important है? Factor responsible for the insulin release. So glucose is a very important stimulus for the release of insulin. So glucose is the most potent and specific stimulus to release the insulin, है ना. तो जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, आपने खाना खा लिया, आपके ग्लूकोज बॉडी से एब्सॉर्ब होके पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा. नाउ योर portal vein has a more amount of glucose. Your portal vein has a more amount of glucose. portal vein कहाँ पे आया? यहाँ से. तो जो भी आपने खाना खा लिया, चपाती रोटी, है ना, या फिर भाकरी, चपाती रोटी भाकरी खाया, उसमें क्या स्टार्च, जो स्टार्च दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू जीआईटी एंड रिलीज द ग्लूकोज. यहाँ से ग्लूकोज रिलीज होके ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो गया. जीआईटी में कौन सा एब्सॉर्प्शन होगी? जीआईटी का ब्लड जाता कहाँ पे? सो मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम जीआईटी दैट इज कैरिड टू ए लिवर वाया पोर्टल वेन. पोर्टल वेन, इफ यू हैव मोर ग्लूकोज इन द पोर्टल वेन, तो ग्लूकोज स्टिमुलेट हो गए. So that portal vein is also supplied to pancreas. तो ये लीवर एंड पैंक्रियास को जाता है. पैंक्रिया का ब्लड ज़्यादा ग्लूकोज का जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज स्टिमुलेट द GLT2 and inhibit the ATP sensitive potassium channel responsible for the depolarization of beta cells in the pancreas, which leads to release of calcium, which leads to release of insulin. We have seen the mechanism in the detail. ग्लूकोज क्या होता है? So glucose enters into beta cell of pancreas by facilitated diffusion via glucose transport. Now it is metabolized in the beta cells after a series of reaction and ion exchange in the cell. So when depolarization of cell membrane reaches to a threshold potential, calcium ion will be released and that will bring about the exocytosis of insulin. Insulin का exocytosis होता है. And there is a release of insulin. ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, how there is a release of insulin. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बोलूँगा, डोंट वरी. क्या होता है देखो, this one is known as a portal vein. ये क्या है? पोर्टल वेन है. इसमें क्या है? ग्लूकोज है. इसमें क्या है? ग्लूकोज. ठीक है, इसमें क्या है? ग्लूकोज. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेन आया जैसे पैंक्रियास को. ये क्या है? ये आपका पैंक्रियास है ना. पैंक्रिया है, यहाँ पे क्या है? बीटा सेल है. मान लीजिए ये आपका बीटा सेल है. तो यहाँ पे पोर्टल वेन में ग्लूकोज आ गया, बीटा सेल है ना, पैंक्रियास को भी ग्लूकोज जनरेटेड ब्लड जाएगा. इसमें ब्लड कौन सा जाएगा? जो जिसमें हाई ग्लूकोज है वो जाएगा. जो ग्लूकोज है, यहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज एंट्री करता है बीटा सेल में. बीटा सेल में ग्लूकोज एंट्री किया, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होकर एटीपी बनता है. एटीपी बना तो यहाँ पे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल होते हैं. एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल, तो ना, तो उस पोटेशियम आयन चैनल का काम क्या होता है? तो यहाँ पे पोटेशियम लेके अंदर डालेगा, वो अंदर का सोडियम बाहर डालेगा. ठीक है, नाउ, है ना. बट जैसे ग्लूकोज एंट्री होता है, एटीपी बनता है, एटीपी क्या करता है? ये चैनल को इनहिबिट करता है. दैट्स व्हाई देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम इनसाइड एंड सोडियम आउटसाइड. सोडियम retains inside and there is a depolarization. Now that depolarization results in the release of more calcium ion, which causes the exocytosis of insulin granules.
इंसुलिन का आप स्टोर होता है बीटा सेल्स में एज अ ग्रैनुल्स, ये ग्रैनुल्स ब्रेक डाउन करके इंसुलिन रिलीज करता है इन द ब्लड, दैट्स हाउ इंसुलिन इज रिलीज. नाउ अदर सब्सटेंसेस अमीनो एसिड्स like arginine, fatty acids, ketone bodies, non-glucose sugar also stimulate the insulin release. Hypokalemia, पोटेशियम लेवल कम हो गया, that inhibit the insulin release. पोटेशियम लेवल कम हो गया तो इनिबिट होता है इंसुलिन, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया इंसुलिन रिलीज डिक्रीज, है ना. देन गैस्ट्रिक हार्मोन, सम हार्मोन्स आल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन. गैस्ट्रिक हार्मोन जैसे आपका गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, pancreatic enzymes, they specially inhibitory polypeptide will also stimulate the insulin. Gastric inhibitory polypeptide, pancreatic enzyme, gastrin, secretin, they also stimulate the insulin release. Okay. Now other hormones like glucagon, growth hormone, ACTH, thyroxine, glucocorticoids, somatostatin, so they also has an impact on insulin release, we have seen. Now what are the, you know, how there is entry of glucose in the brain, in the CNS. The brain will also regulate the insulin release. Brain will regulate the insulin release via sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic activation of alpha 2 receptor will inhibit the insulin release. Sympathetic activation of beta 2 receptor will increase the insulin release, and activation of muscarinic receptor will inhibit the insulin release. Activation of muscarinic receptor will inhibit the insulin release, we have seen. Some drugs also increase or decrease the insulin release. This is xanthine, sulfonylureas stimulate the insulin release. Yeah. And whereas diazoxide, thiazides, they will inhibit the insulin release. Indole, diazoxide, thiazides, they will inhibit the insulin release. Now, transport of insulin and metabolism of insulin excretion. Insulin circulate as a free form in the plasma. Half life मैंने बोला है 5 to 10 minutes, 3 to 5 minutes, and is degraded by liver, kidney, skeletal muscle, है ना. इंसुलिन को ब्रेक डाउन कौन करता है? लिवर करता है, किडनी करता है, skeletal muscle. Insulin is secreted from pancreas in the monomeric form, which is easily diffusible. But therapeutically जो ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन यूज होता है, therapeutically used insulin preparation customer tetrameric or hexameric form to dissociate slowly. It has a delayed onset of action. So that's why the native insulin is a rapidly acting, but therapeutically used insulin is a slow acting. ठीक है. Now देखो यहाँ पे तो इंसुलिन रिसेप्टर, तो इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. इंसुलिन रिसेप्टर आर नथिंग बट द कैटेगरी ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. क्वेश्चन आ चुका है. इंसुलिन रिसेप्टर आर नथिंग बट द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, है ना. तो रिसेप्टर में देखो आपने देखा है, वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. So there are 4 type of receptor. Type 1 is known as ion channel, type 2 GPCR, type 3 tyrosine kinase, type 4 intracellular. So insulin receptor क्या है? Insulin receptor is a type 3, that is a tyrosine kinase receptor और kinase linked receptor. Tyrosine kinase linked receptor, that is a insulin receptor. Now insulin receptor has a, है ना, 2 subunit. Insulin receptor has a 2 subunit. Outer subunit known as alpha and, है ना, which is on a surface, and inner subunit is known as a beta. So outer जो subunit है उसको alpha बोलते हैं. So there are 2 outer alpha subunit and 2 beta subunit. Now alpha subunit is known as a binding site. Alpha subunit क्या है? Binding site है, binding. So alpha subunit is a binding site. किसको bind करता है? Insulin will bind to alpha subunit. Then this binding will send a signal to a beta subunit. Beta subunit क्या है? It is known as a catalytic domain. It is known as a catalytic domain. So it is bound with the protein. Beta subunit is bound with the protein. So binding of insulin, जब इंसुलिन इसको बाइंड करता है अल्फा सबयूनिट को, तो सिग्नल जाता है बीटा सबयूनिट को. देयर इज अ फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन. So protein will be phosphorylated. So phosphorylation of protein will alter the enzymatic activity. Enzymatic activity मतलब क्या? जैसे ग्लूकोकाइनेज है ना, glucokinase, phosphorylase enzyme. So increase or decrease in the synthesis of different enzymes required for the metabolism of glucose. So glucose uptake is increased,
है ना, ग्लाइकोलिसिस इज इंक्रीज्ड, क्रेब साइकिल इज इंक्रीज्ड, बट ग्लूकोनेओजेनेसिस इज डिक्रीज्ड. तो दैट्स हाउ इंसुलिन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर, है ना, कैसा एक्ट होता है. तो विल अगेन विल सी again, you can see over here. तो इंसुलिन रिसेप्टर, ये क्या है भाई, इंसुलिन रिसेप्टर, दैट इज अ टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर. इंसुलिन रिसेप्टर इज अ टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर. तो जब इंसुलिन बाइंड करता है, व्हेन इंसुलिन विल बाइंड टू ए रिसेप्टर, इट विल बाइंड टू अल्फा सबयूनिट known as a binding domain, and alpha subunit are attached with a beta subunit known as a catalytic domain. Beta subunit has a tyrosine protein kinase activity, right? So after binding insulin, when it will bind to the alpha receptor, there is a internalization of receptor. Internalization of receptor. Now what happens? The IRS मतलब क्या, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट प्रोटीन. तो मतलब सिंपली प्रोटीन, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट प्रोटीन, they are phosphorylated. So there is a phosphorylation of, है ना, insulin receptor substrate protein, and after the phosphorylation there is a generation of secondary messengers. मतलब यहाँ पे phosphoenol pyruvate 3, inositol pyruvate 3, है ना, phosphatidyl inositol pyruvate, phosphatidyl inositol triphosphate. So phosphatidyl inositol triphosphate, that is secondary messenger. यहाँ पे secondary messenger जनरेट होता है, that will either activate or inhibit the different enzymes. Again, phosphorylated protein will also cause again phosphorylation cascade. मतलब बहुत सारे phosphorylation होता है, phosphorylation that will also either stimulate or inhibit the enzyme, and also that will cause stimulation of this mitogen activated protein kinase, that will also stimulate the mitogen activated protein kinase. तो ये जो एक्शन है, पहले वाले एक्शन जो है, that is known as the immediate action. देखो क्या होता है कि इंसुलिन जब बाइंड करता है, तो इंसुलिन विल बाइंड टू द रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर विल बाइंड टू ए अल्फा सबयूनिट, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग साइट. बाइंडिंग ऑफ अल्फा सबयूनिट, binding of insulin with the alpha subunit, that causes the internalization of the receptor. Okay, and that signal is sent to the beta subunit of the receptor known as a catalytic domain. ये catalytic domain है, ये क्या है, binding domain होता है, binding. Then there is a phosphorylation of protein. What protein? Insulin receptor substrate protein. So phosphorylation होगा, and there is generation of secondary messenger, like for example PIP3, मतलब क्या, phosphatidyl inositol phosphate 3. ये secondary messenger क्या करता है, that will activate the or inhibit the enzymes. अब ये enzyme activate inhibit कौन से enzyme? तो activation of glucokinase, phosphofructokinase जैसे. So enzyme responsible for the glycolysis, that will be activated. Enzyme responsible for the gluconeogenesis, that will be inhibited, right? So this is known as the immediate action. ये rapid action होता है, immediate होता है, immediate action. Now this phosphorylated protein, there is again phosphorylation cascade, and phosphorylation cascade, है ना, cascade हो जाएगा, है ना, phosphorylation, series of phosphorylation and dephosphorylation होता है proteins का, and again that also activate the enzyme, that is known as the late action. And also there is a synthesis of ATP, and there is a synthesis of glucose transporter, that is a intermediate action. Rapid action, immediate action और intermediate action. Then है ना, rapid action, immediate को अपन rapid बोलेंगे, immediate action is also can be called as rapid action. Rapid, है ना, ये क्या है, intermediate action. Synthesis of glucose transporter, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बढ़ाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बढ़ गया तो ग्लूकोज का एंट्री सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के लिए, राइट. देन अगेन दैट phosphorylation cascade also causes the phosphorylation of MAP kinase. MAP kinase मतलब क्या है, mitogen activated protein kinase. So that will signal to a nucleus में सिग्नल जाएगा, एंड जो न्यूक्लियस में DNA है उसका रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा,
और जो प्रोटीन बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, mRNA एंड देन प्रोटीन। प्रोटीन कौन से बनेगा? सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, सेल के नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, तो दैट इज नोन एज अ लेट एक्शन, दैट इज नोन एज अ लेट एक्शन, है ना। सो insulin will give you three actions known as the first one is the rapid action, known as the rapid action कौन सा है? ये वाला rapid action है। then intermediate action कौन सा है? ये वाला intermediate action, and late action or delayed action, that is a synthesis of protein, we have already seen, but ये diagrammatic way से, okay, so that's how insulin react. now next part is nothing but the how mechanism of action of insulin, how insulin will act, mechanism of action of insulin. So it act on a specific receptor located on the cell membrane, we have seen already, okay, in a diagram. So practically every cell has an insulin receptor, but liver cell and muscle cell has a highest insulin receptor. So what is insulin receptor? It is a tyrosine kinase receptor tyrosine kinase. क्या होता है? It is a glycoprotein receptor consisting of 2 alpha subunit which is located on a extracellular alpha subunit known as the binding site, and 2 transmembrane beta subunit known as the catalytic site. They are linked together by disulfide bond. When insulin bind to the alpha subunit, है ना, alpha subunit is the binding site, while beta subunit is a tyrosine kinase activity. Binding of insulin to the alpha subunit induces the aggregation and internalization of receptor along with the bound insulin molecule. This activates the beta subunit, which then phosphorylated into tyrosine residue of the alpha and beta. The series of phosphorylation cascade. Okay, cascade of phosphorylation and desphosphorilation reaction results in the amplification of signal, and signal is transmitted. That results in the stimulation or inhibition of enzymes involved in the metabolic reaction. Then also secondary messengers are also generated. कौन सा है secondary messenger? है ना, phosphatidyl inositol 3 phosphate वगैरह. So insulin acts via increasing the different glucose transporters, and also it will change the gene. Okay, it will also increase the cell proliferation. We have seen. ठीक है, ये mechanism. Now absorption, distribution, metabolism, elimination. Orally insulin is ineffective. क्यों इफेक्टिव नहीं है orally? Because insulin is a peptide. इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड है. आपने अगर orally इंसुलिन दिया तो आपके GIT में उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. So insulin is ineffective orally because it is a peptide. So it is given by parenteral route. Along with the zinc. Why zinc? When zinc is given along with the insulin, so zinc will induce the polymerization. तो इंसुलिन क्या होता है? नॉर्मली मोनोमर होता है, बट अगर जिंक उसके साथ में लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो जिंक के अराउंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामर. तो ओके, नाउ नॉर्मली इंसुलिन इज अ मोनोमर, बट व्हेन इट इज एडेड विद जिंक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामर ना. 6 मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो गए, आप एक ग्लोबिल बनाएंगे, हेक्सामर. नाउ दैट विल डिसोसिएट स्लोली. सो टू एनहांस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन इज कंबाइंड विद द जिंक. तो जिंक और सम प्रोटीन कौन सा? जैसे आपका एक प्रोटीन है आइसोपिन प्रोटीन है, दैट इज ओके. सो इंसुलिन इज कंबाइंड विद जिंक एंड सम प्रोटीन, है ना, टू स्लो डाउन द एब्सॉर्प्शन एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो सबक्यूटेनियसली इंसुलिन कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस. तो इंसुलिन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, and it is given subcutaneously in the thighs, in the arms, in the skin, but maximum absorption of insulin takes place from the abdominal wall. तो देखो, जिसको डायबिटीज होता है ना, वो कहाँ पे इंजेक्शन लेता है? उसके टमी में. मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन will be absorbed maximum from the abdominal wall. तो subcutaneous area of abdominal wall. तो abdomen से सबसे ज्यादा इंसुलिन एब्सॉर्ब होता है. So it is a less rapid absorption from the arm and less rapid from the thighs. तो आपके हाथ में अगर subcutaneous इंजेक्शन देंगे तो कम एब्सॉर्ब होगा, और थाइज में देंगे तो उससे भी कम होगा. तो फास्टेस्ट एब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है? एब्डोमिनल एरिया, राइट. नेक्स्ट विल सी
एडवर्स, ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, ऑब्वियसली इंसुलिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया करेगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। हाइपोग्लाइसेमिया इज बिकॉज ऑफ द ओके सिंपैथेटिक सिम्टम्स इंक्लूड्स। हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो सिम्टम्स क्या आएंगे, तो हाइपोग्लाइसेमिया इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ योर इंसुलिन, है ना। आपको अगर आपके दादाजी, मान लीजिए आपके घर में क्या है, एक दादाजी है, दादाजी है और उनको क्या है, डायबिटीज है, उनको इंसुलिन दिया है डॉक्टर ने, है ना। डॉक्टर ने बोला है कि खाना खाने के बाद में आपको 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट इंसुलिन लेना है ना। दादाजी को डायबिटोलॉजिस्ट ने बोला है कि दादाजी आपको खाना खाने से पहले 1 यूनिट इंसुलिन लेना है। आपका हो गया बी फार्म, आपका बी फार्म हो चुका है, आपको लगता है आप उन्हीं भगवान है, आपका क्या हुआ है, बी फार्म हुआ है, आपको क्या लगता है आप उन्हीं भगवान है। तो आपने क्या किया, दादाजी को 2 यूनिट इंसुलिन दिया, क्या होगा, दादाजी का ब्लड शुगर लेवल कम होगा। अगर आपका दिमाग खराब होगा, आपको लगता है आप उन्हीं भगवान है, आपने क्या किया, दादाजी को 3 यूनिट इंसुलिन दे दी, है ना, और भी दादाजी का ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। और आपने क्या किया, दिमाग खराब होने के कारण आपने 4 यूनिट दे दिया, 4। तो इफ यू आर गिवन 4 यूनिट, व्हाट विल हैपन, दादाजी का राम नाम सत्य हो जाएगा, दादाजी का कार्यक्रम हो जाएगा पूरा, दादाजी आपके भगवान को प्यारे हो जाएंगे, बिकॉज सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। तो एडवर्स रिएक्शन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया। तो इफ यू इंक्रीज द डोज, हाइपोग्लाइसेमिया विल इंक्रीज, दादाजी का राम नाम सत्य हो जाएगा। आपको कल सुबह व्हाट्सएप पे न्यूज आएंगी, दुखद निधन वार्ता, ठीक है। तो एडवर्स रिएक्शन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया। एंड रिमेंबर, all drug used in the diabetes, all drug will have hypoglycemia as adverse effect, all drug will have hypoglycemia as adverse. Now what are the symptoms of hypoglycemia? अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो सिम्टम्स क्या है, वैसे तो आपको सिम्टम्स मालूम है, ठीक है। सिंपैथेटिक सिम्टम्स, सिंपैथेटिक सिम्टम्स क्या है, इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ एड्रेनालिन, vasoconstriction, hunger, anxiety, tachycardia, heart rate बढ़ जाएगा, palpitation and sweating. Cerebral symptoms like confusion, depression, coma, convulsions and edema. Convulsions मतलब epilepsy. देखो बचपन में, है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो बचपन में हम सब स्कूल गए और स्कूल में सुबह सुबह एक कार्यक्रम होता था। बचपन में सुबह सुबह एक कौन सा कार्यक्रम होता था अपने स्कूल में, बचपन में अपने कार्यक्रम होता था, पहले स्कूल में गए तो राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद में प्रार्थना होगी, तो उसके बाद में असली कार्यक्रम होता था क्या, पीटी का क्लास, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग का क्लास, मतलब चलो दाएं बाएं ऊपर हाथ करो नीचे करो सब, है ना। तो वो पीटी के क्लास में क्या होता था कि पीटी का जब सेशन चल रहा है उसमें बहुत सारे लड़कियां नीचे गिरती थी। क्यों गिरती थी, क्योंकि उनमें हाइपोग्लाइसेमिया होता, खाना खा के नहीं आती घर से। तो हाइपोग्लाइसेमिया का सिम्टम्स क्या है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, कोमा, कन्वल्जन, सेरेब्रल एडिमा, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया, देन अनरिकॉग्नाइज्ड अटैक ड्यूरिंग नाइट। तो इंसुलिन जिसको चालू है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड अटैक ड्यूरिंग द नाइट, मतलब सो गए आप इंसुलिन लेके, आपको लगा कोई दिक्कत नहीं अभी खाना खा लिया, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, आप सो गए नाइट में। कभी कभी क्या होता है, रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, कभी कभी इंसुलिन क्या करता है, रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब आपका नींद में ही आपकी शुगर बढ़ जाएंगी, रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया। आपने क्या किया, खाना खा लिया, डायबिटिक पेशेंट है आप, खाना खा लिया, इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, आपको डॉक्टर ने बोला है इंसुलिन ले लो डायबिटीज के लिए, तो डॉक्टर ने इंसुलिन ले लिया, आपको लगा था टेंशन नहीं, अभी खा गया मैं, खाना खाया, इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, बट रात को ही, है ना, रात्रीच खेळ झाली, रात्रीच का खेळ झाला, मग रात्रीच खेळ असा झाला की तुमचा रात्रीच शुगर वाढली, कशामुळे वाढली, बिकॉज इंसुलिन हॅज अ वन ॲडवर्स इफेक्ट नोन एज अ अनरेकग्नाइज्ड अटॅक, अनरेकग्नाइज्ड अटॅक ड्युरिंग द नाईट, है ना, मग रात्रीचा खेळ झाला तुमचा, रिबाउंड ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, रिबाउंड ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। तो रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया विद ग्लाइकोसिउरिया इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, जो इसको, ये जो है ये सिम्टम्स इसको बोलते हैं सोमोजी इफेक्ट। कौन सा मोजी, सोमोजी, म्हणजे काय की बाबा ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का ॲडवर्स इफेक्ट क्या है, पहला तो है हाइपोग्लाइसेमिया, ये तो करेगा ही करेगा हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड क्या है, अनरिकग्नाइज्ड अटैक ड्यूरिंग नाइट, है ना, अनरिकग्नाइज्ड,
रात को ही अटैक आ जाएगा। कैसा? रात को ही अटैक आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया का, अनरिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन द नाइट। उसके बाद में रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, पहले तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा और बाद में बढ़ जाएगा, है ना। दूसरे दिन सुबह सुबह क्या होगा? ग्लाइकोज यूरिया, तो उसको बोलते हैं सोमोजी इफेक्ट, है ना। मतलब क्या? रात्रि से खेल सारी फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज्ड बाय न्यूरोनल डैमेज। देन शुगर लेवल बढ़ गया तो रेटिनोपैथी होगा, आपके आईज में दिक्कत हो जाएगा। रेटिनोपैथी में बी वर्सन विद द रिपीटेड हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, है ना। आई होप यू आर गेटिंग, है ना। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। देन एक तो ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, सोमोजी इफेक्ट, है ना। अनदर एडवर्स इफेक्ट देखो, इंसुलिन लिथोडिस्ट्रोफी। क्या है भाई? इंसुलिन लिथोडिस्ट्रोफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी, देखो लिपो मतलब क्या? लिपिड्स, डिस्ट्रोफी मतलब क्या है ना। डिस्ट्रोफी मतलब क्या? एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इंसुलिन डिस्ट्रोफी मतलब क्या? आपने देखा होगा जो भी डायबिटिक का पेशेंट है वो एब्डोमिनल एरिया में इंजेक्शन लेता है इंसुलिन का, क्यों? वहां से एब्सॉर्प्शन होता है। बट एट द साइट ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन विल इंक्रीज द लिपोजेनेसिस, इंसुलिन विल इंक्रीज द लिपिड सिंथेसिस फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है। तो जहां पे इंजेक्शन दिया वहीं पे भी लिपिड सिंथेसिस करता है वो, दैट्स व्हाई, है ना। सो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ lipid tissue, there is a deposition of fats at the site of injection known as the insulin lipodystrophy, है ना। so there are two type of insulin lipodystrophy. first one is known as a dyslipo, है ना, lipohypertrophy मतलब क्या? due to lipogenic property of insulin there is a formation of spongy lumps at a injection site. जहाँ पे इंजेक्शन दिया वहाँ पे लिपिड बना देगा, और लिपिड बन गया तो वहां पे स्पॉन्जी लम्स बनेंगे एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, है ना, नोन एज इंसुलिन लिपोहाइपरट्रॉफी, ठीक है। और दूसरा होता है लिपो एट्रोफी, मतलब लॉस ऑफ लिपिड ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन, लिपो एट्रोफी। तो दिस टू टुगेदर दे आर नोन एज लिपोडिस्ट्रोफी, है ना। देन अगेन विजुअल अकोमोडेशन डिस्टर्बेंसेस, इंसुलिन क्या करता है? आपको प्रॉपरली जजमेंट नहीं करेगा साइड का। न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद इंसुलिन यूज, ओबेसिटी, इडीमा एंड हिपेटोमेगली, लीवर बढ़ जाएगा, आप है ना कद्दू बन जाओगे, ओबेसिटी। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। नाउ यूज क्या है इंसुलिन का? यूज ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन का यूज क्या है बच्चों को भी मालूम है। तो इट इज यूज्ड इन द इडियोपैथिक डायबिटीज मेलिटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस एंड ग्लाइकोसूरिया, diabetes mellitus with the glycosuria. Intravenous insulin drip is used to treat the hyperkalemia. Glucose insulin potassium drip is used in the treatment of patient with the myocardial infarction, complicated arrhythmia and hypokalemia. Complicated arrhythmia with the hypokalemia. तो इंसुलिन का यूज क्या रहेगा? डायबिटीज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं, है ना, इंसुलिन मिक्सचर्स। तो इंसुलिन मिक्सचर्स अपन कल देखेंगे, विल सी द इंसुलिन मिक्सचर्स टुमारो, है ना। इंसुलिन मिक्सचर के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, विल सी द इंसुलिन मिक्सचर्स टुमारो। डायबिटीज, बाकी लोग डायबिटीज एक लेक्चर में लेते, मैं यहाँ पे 4 या 5 लेक्चर लूंगा कि प्रॉपर डायबिटीज समझ में आना चाहिए आपको, और कौन सा भी क्वेश्चन आया तो आपको आंसर कर लेना चाहिए। टुमारो विल सी दिस insulin preparations, and tomorrow we'll start the oral hypoglycemic drugs, oral antidiabetic drugs कल अपन देखेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह सब। tomorrow again very important session is there, so see you tomorrow, कल आपको देखते हैं फिर। I hope you are getting my points. Are you getting my points?